देखिए ये कहाँ से शब्द आया है। ओके हाँ बोले सर, जो सीडीएस ने एक बात कही है, उनके एक बयान को लेकर जो है कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कुछ कांग्रेस पार्टी के दिमाग में सवाल है? आप लोगों के क्या सवाल है जो आप सरकार से? देखिए, हमारे सम्मानित आदरणीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल चौहान जी ने सिंगापुर में एक भेंट वार्ता में बहुत सारे चीजें कही हैं। हम चाहते थे कि रक्षा मंत्री यही बात सर्वदलीय बैठक में बोलें। हम चाहते थे कि यही बात जो जनरल चौहान ने कहा है प्रधानमंत्री लोकसभा में बोले, राज्यसभा में बोले। पर सिंगापुर से हमें जानकारी मिलती है कि पहले 2 दिन ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ और हमने क्या उससे सबक सीखा, हमने क्या परिवर्तन किया, और उसके बाद जो और 2 दिन ऑपरेशन सिंदूर चला उसमें हमने क्या कार्रवाई की, हमको सिंगापुर से सुनना पड़ा। तो हम मानकर चल रहे हैं कि इसका विश्लेषण होगा, इसका गहरा अध्ययन होगा। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि कारगिल युद्ध के 3 दिन समाप्त होने के बाद वाजपेयी सरकार ने कारगिल रिव्यू समिति का गठन किया। 4 सदस्य थे। उसकी अध्यक्षता के सुब्रमण्यम ने की, जो हमारे जाने माने रक्षा मामलों में विशेषज्ञ थे, और वो आज के विदेश मंत्री जयशंकर जी के पिताजी भी थे। 4 सदस्य थे, के सुब्रमण्यम, जनरल हजारी, बीजी वर्गीस और सतीश चंद्रा। और 15 दिसंबर 1999 को उन्होंने अपना रिपोर्ट पेश किया वाजपेयी सरकार को, और 23 फरवरी 2000 को वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश होता है। देखिए, ये रिपोर्ट है, फ्रॉम सरप्राइज टू रेकनिंग, कारगिल रिव्यू कमेटी, दिसंबर 15, 1999। और ये 150 पन्ने का एक रिपोर्ट है। और देखिए, ये है आखिरी पन्ना, क्या है? हस्ताक्षर के सुब्रमण्यम, जनरल द्विवेदी, बीजी वर्गीस और सतीश चंद्रा। ये विश्लेषण हुआ था, हमने क्या सीखा, क्या सबक सीखा, वास्तविकता क्या थी, हकीकत क्या थी, और आगे के लिए हमें क्या करना है। सबसे बड़ी बात, आगे के लिए हमें क्या करना है। तो हम मानकर चल रहे हैं कि इस पर चर्चा होगी, बहस होगा पार्लियामेंट में। विपक्ष के साथ भी विश्वास में लेना चाहिए प्रधानमंत्री को। और हमारी एक सवाल है कि क्या जो कारगिल रिव्यू समिति की माफिक समीक्षा की गई थी कारगिल युद्ध के बाद, क्या आप जनरल चौहान जी ने जो कहा है उस मामलों पर भी आप विश्लेषण करेंगे, अध्ययन करेंगे, रिपोर्ट पेश होगा और पार्लियामेंट में उस पर बहस होगी? तो यही सवाल है, क्योंकि इस जो ऑपरेशन सिंदूर के समय में जो हमने देखने को मिला, चीन की क्या भूमिका है, जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान के बीच में जुगलबंदी बन गया था एयरफोर्स को लेकर, उसका असर क्या है हमारे भविष्य की रणनीति के लिए, इस पर सोचने की जरूरत है, एक सामूहिक संकल्प दिखाने की जरूरत है। सर, एक और सवाल जो है तो आपको की पार्टी क्या कर रही है, वो है जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर के मैंने जो है इंटरवेंशन करा, इंटरव्यू करा, मैंने ही दोनों देशों को जो है सीजफायर करवाया, और ट्रेड की बात को कर रहे हैं बार बार। कल तो 24 घंटे में 2 बार उन्होंने बिल्कुल किया। कैसे मैंने गिना है राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों का, और 21 दिनों में उन्होंने 12 बयान दिए हैं। और बयान में क्या कहते हैं कि मेरे वजह से युद्ध विराम हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर मैंने रुकवाया है। ये पहली बात वो कहते हैं कि अमेरिका के हस्तक्षेप के कारण, अमेरिका के मध्यस्थता के कारण ये 2 देश के बीच में युद्ध विराम हुआ। दूसरी बात कहते हैं ये परमाणु हथियार देश हैं, तो गंभीर खतरा है न केवल दक्षिण एशिया के लिए पर दुनिया के लिए, इसलिए हमें चिंता थी, इसीलिए मैंने हस्तक्षेप किया। ये दूसरी बात कहते हैं। और तीसरी बात कहते हैं, मैं ट्रेड को लेकर, टैरिफ को लेकर मैंने उनको लुभाया और मैंने कहा अगर आप अमेरिका के साथ ज्यादा व्यापार करना चाहते हो तो युद्ध विराम कराओ। ये 3 बातें 21 दिन में 11 बार राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा। हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं, हमारे प्रधानमंत्री की ओर से कोई बयान नहीं आया है। वो यहां वहां जा रहे हैं,
रैली एड्रेस कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण कर रहे हैं, पर राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों पर वो बिल्कुल चुप है। हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप जो के बार बार कह रहे हैं, 21 दिनों में 11 बार उन्होंने कहा है, परमाणु हथियारों के बारे में कहा है, ट्रेड टैरिफ के बारे में कहा है, व्यापार के बारे में कहा है, और भारत और पाकिस्तान को एक ही नाव में बिठा दिया है, उसके बारे में प्रधानमंत्री की क्या राय है, क्या कहते हैं? तो यही तो बात है। और विदेश मंत्री, अमेरिका के विदेश मंत्री ये भी कहा है कि तीसरे जगह में इन दोनों देशों के बीच में बात हो सकती है। तो ये तो हमारे नीति के खिलाफ है, हम इसका पूरा विरोध करते हैं। तो क्या है वास्तविकता, क्या है राष्ट्रपति ट्रंप की भूमिका क्या है? अमेरिका ने क्या कहा हमसे? अमेरिकी लोगों ने तो कह दिया है, उपराष्ट्रपति वैंस ने कह दिया है, विदेश मंत्री ने कह दिया है, राष्ट्रपति ने 11 बार कहा है। और एक और बार मैं कह दूं, एक और बात कह दूं, उनके जो वाणिज्य मंत्री हैं हॉवर्ड लुटनिक, वो एक अदालत में एक बयान दायर करते हैं और बयान में लिखा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप के वजह से ये युद्ध विराम हुआ है और यही संभव हुआ है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि व्यापार आप अमेरिका से के साथ करना चाहते हो, अमेरिका की जो आयात कर है उसको घटाया जाएगा, मैं आपको उसके बाद में बातचीत करेंगे, पर एक ही शर्त पर बात करेंगे कि आप दोनों के बीच में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने अदालत में, कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में ये बयान दायर किया है, पर हम लोग चुप हैं। तो यही असली बात तो ये है, हम बार बार कह रहे हैं प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक बुलाएं, विपक्ष के नेताओं को विश्वास में लें, एक विशेष सत्र बुलाएं लोकसभा का, राज्यसभा का, एक सामूहिक संकल्प हम दिखाएं दुनिया को, एक सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करें। जो 22 फरवरी 1994 का जो प्रस्ताव था पीओके को लेकर, उसको दोहराएं, और पिछले 30 साल में जो और नई चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ा है, खासतौर से चीन को लेकर, और चीन और पाकिस्तान के बीच में जो गहरे संबंध बन गए हैं, और उसका असर हमें देखने को मिल रहा है, अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय भी हमें देखने को मिला। तो इन सब विषयों के बारे में हम चर्चा करें। संवेदनशील मामले हैं, गंभीर मामले हैं, हम जिम्मेदार पार्टियां हैं। और देखिए, निशाना बीजेपी को, प्रधानमंत्री को पाकिस्तान बनाना चाहिए, आतंकवादियों को बनाना चाहिए निशाना, कांग्रेस पार्टी को नहीं। आप हमें निशाना बना रहे हो, हमारी आलोचना कर रहे हो, हमारी देशभक्ति पर आप सवाल उठा रहे हो। पहलगाम के आतंकवादी को आप अब तक पकड़ नहीं पाए। जो पहलगाम के आतंकवाद की जिम्मेदारी, तो प्राथमिक जिम्मेदारी तो पाकिस्तान की है, उसमें कोई तो शक नहीं हो सकता। पर जो आतंकवादी थे वहां पहलगाम में, जिन्होंने ये क्रूर हत्या की पर्यटकों की, वो तो, उनको तो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, वो मारे नहीं गए। और कुछ रिपोर्ट के मुताबिक वो पहले से ही 18 महीने में 3 ऐसे आतंकवादी हमले हुए थे। पूंछ में दिसंबर 2023 को, गांदरबल में अक्टूबर 2024 को, गुलमर्ग में 2024 को, और पहलगाम में अप्रैल 2025 को। तो ये आतंकवादी, इनको तो गिरफ्तार कीजिए, इनको अरेस्ट कीजिए या मारिए। क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? कांग्रेस पार्टी की आलोचना कर रहे हैं आप। तो एकता और एकजुटता पहले दिन से हमारे अध्यक्ष, हमारे नेता राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बार बार कहा, एकता और एकजुटता सुरक्षा के मामले में। और जो अभी जनरल चौहान जी ने कहा है, और वो भी सिंगापुर से कहा है, बेहतर होता हमारे देश में ही कई मंच हैं, सर्वदलीय बैठक है, लोकसभा है, राज्यसभा है, आप विपक्ष के पार्टी नेताओं को बुला सकते हैं, तो आप उनके साथ बात करते हैं। हमें सिंगापुर से ये जानकारी मिलती है। So how do you see after the statement of CDS, General Chauhan, now the opposition parties are saying that what they were telling, that it is completely being proven right. So
See, well, the most respected General Chauhan, the Chief of Defence Staff, has spoken. He has spoken from Singapore. It would have been better that what he has spoken, the Defence Minister would have taken the all-party meeting, 2 all-party meetings he chaired, instead of the Prime Minister. The Defence Minister did not say anything on this. It would have been better, it would have been in keeping with our democratic traditions if an all-party meeting had been called, the Prime Minister had chaired, and whatever General Chauhan has said, this information could have been shared with the opposition leaders. A special session of Parliament could have been convened in Lok Sabha and Rajya Sabha, and the same information could have been shared by the Prime Minister. We had to wait for General Chauhan to make these revelations from Singapore. And these are very serious issues which the nation has to come to grips with. 3 days after the Kargil war ended, on the 29th of July 1999, the Vajpayee government set up the Kargil Review Committee. And here I have a copy, it's a 150-page report of the Kargil Review Committee. It submitted its report on 15th of December 1999. 4 members, K. Subramaniam, the Strategic Affairs Guru, the father of Dr. Jaishankar, General Hazari, B.G. Varghese, and Satish Chandra from the National Security Council. This is the signatures in the report. These are the 4 signatures. 150 pages. And do you know, after this report was submitted to the government, to the Vajpayee government, on the 15th of December 1999, this was tabled in Parliament on the 23rd of February 2000. Of course, sensitive matters had been removed, and rightly so, they should be removed. But this report, and it's called From Surprise to Reckoning, this was an analysis of what caused the Kargil war, what lessons for India. See, we have to look to the future. What are the lessons we learn? That's what General Chauhan has said in Singapore. That's what should be debated in Parliament. There are military issues, which only the military can discuss, but there are political issues. There are issues relating to political strategy, to diplomatic strategy, economic strategy, particularly in relation to China. And this nexus between China and Pakistan, which has become very apparent during Operation Sindhu. So these are political issues. So we should discuss this in all party meetings with the Prime Minister in the chair. We should discuss this in Parliament with the Prime Minister present in Lok Sabha and Rajya Sabha. And we didn't have to wait for statements to be made from Singapore. We are supposed to be the mother of democracy, right? We have democratic traditions. So let's respect those democratic traditions. Mr. Vajpayee wanted Prime Minister Nehru to convene Parliament when the Chinese attack was going on in October-November 1962. And Parliament was convened on the 8th of November 1962. That was democratic traditions. That the leader of the opposition calls for a Parliament session and the Prime Minister responds. And the Prime Minister is sitting and listening to criticism. So let's, the issues that General Chauhan has raised are very serious. And they impinge not just on military strategy. They impinge on foreign policy, they impinge on economic strategy, they impinge on our diplomatic strategy. And we must have a discussion, a responsible discussion. And at the same time, sir, Donald Trump, the President of America, has again said last 24 hours 2 times that the United States of America and especially Donald Trump intervened between these 2 countries, India and Pakistan, for a ceasefire. He's also talking about the trade issues he raised with both the countries. So how do you see it? Because your party and the opposition is raising a question on it. No, I made a count. President Trump has repeated the same point that he's been making. In 21 days, he's repeated 11 times. What is he saying? He's saying, I mediated, I brokered a ceasefire. The new things that he has said is about nuclear escalation. He said these are 2 nuclear powers and it was very dangerous to have that escalation. And this third thing, which he has been saying all through, is that I use the instrument of trade and tariffs. And I told them, if you want to trade with America, you better stop fighting with yourselves. Better stop having this war. These are the 3 things he's been saying. He's been saying 11 times in 21 days. Mr. Marco Rubio has said this. Of course, Rubio has also said there will be talks between the 2 countries at a third neutral side. Mr. Vance appears to have communicated this to the Prime Minister. And on top of it,
the U.S. Commerce Secretary, which means the U.S. Commerce Minister, Howard Lutnick, files a statement in the U.S. Court of International Trade. In a court statement, it's like an affidavit, saying that President Trump, it was President Trump's use of the trade instrument, the tariff instrument, that forced India and Pakistan to stop the war, that forced India to stop Operation Sindhu. But the Prime Minister is silent. Prime Minister has not responded to what President Trump has been saying and his colleagues have been saying. He's targeting the Congress party. He should be targeting Pakistan. He should be making sure that the terrorists responsible for Pahalgam are caught or they're killed. I mean, these are terrorists who, according to some reports, were responsible for terror attacks in December 23 in Poonch and October 24 in Gandarbal, Gagangir, and in Gulmarg. So instead of that, you're attacking the Congress party. The Congress party has asked for, has demanded, has advocated, has championed unity and solidarity at a moment of great crisis, beginning April 22nd. And we have extended our full support to the government. And we have said as Prime Minister, chair an all-party meeting. Prime Minister, please call a session of Parliament. And I think the revelations of General Chauhan yesterday in Singapore makes our demand even more relevant now. Let's have a discussion in Parliament. Let's have a discussion in an all-party meeting and let's move forward. And the outcome of the Parliament session should be a resolution which reiterates the resolution of February 22nd, 1994 on POK and brings in new elements, particularly this emerging, not emerged, it has no longer emerging, it has emerged, it's embedded. China and Pakistan is really embedded. That's a new challenge we have to face. So we are facing China on one front and we're facing China on the other front also. It's a new challenge. But we are running record trade deficits with China. Prime Minister has given a clean chit to China on the 19th of June 2020. These are issues that we should discuss. We are a democracy. We don't have anything to be afraid of. But, General Chauhan's statements are serious. They deserve serious study. I wish that, this was taken up in Parliament very soon. I wish it's taken up in all party meetings. I wish it's taken up in the standing committees. This requires political discussion also. Of course it requires military strategy. And military strategy cannot be discussed in the open. Military strategy has to be discussed amongst military professionals. But I'm talking of political strategy, economic strategy, diplomatic strategy. That has to be discussed in Parliament and in all party meetings. So my last and pertinent question is just relevant because there is discussion going on that why the Congress party is interested in knowing how many aircrafts have been put down. See, yesterday. And one more thing, sir, about what are the apprehension of Congress party regarding the foreign issues which are facing. We have raised these issues. We have raised these issues to the national interest, and these issues have been answered by General Chauhan. General Chauhan himself has said what he has said, and there's nobody who knows this information more minutely than General Chauhan, So General Chauhan has said, so let's take General Chauhan what he has said. And see, what was the Kargil Review Committee? I have read 150 pages. Anybody can read it. It's available on the internet. It was tabled in Parliament. It's available on the Parliament website. You read it. It's a post-mortem. Plus, most importantly, what do we do next? How do we prepare ourselves? In fact, if I remember, the appointment of the CDS, one of the recommendations of the committee was that there should be a CDS. The CDS is an outgrowth of the Kargil Review Committee. There are many other recommendations on intelligence and, coordination and so on and so forth, and strategy. I mean, many of these issues cannot be discussed in public. So we have raised some questions. We raised questions. You see, our demand was Prime Minister should chair an all-party meeting. 2 all-party meetings were held. Prime Minister did not come. Kharge ji and Rahul ji wrote to the Prime Minister, calling for a session of Parliament where we discuss these issues, not for fault finding, but for taking stock. Where are we? What are the new challenges? How can we come together? How do we send a collective
a signal of collective resolve and collective will on matters of national security. The Congress party never plays politics. But it's the BJP that has politicized Operation Sindoor. It's Mr. Modi, the Prime Minister, who has politicized Operation Sindoor. We have never politicized any such operations in the past. Never. We have always taken the nation into confidence.